हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है हॉगवर्ट्स लेगेसी के एक नए एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में अपन ने दो क्लासेस अटेंड किए थे। एक पोशन बनाने वाला क्लास जिसमें तुम्हें अपना हीलिंग पोशन और एक और कोई एक जो डैमेज अब्जॉर्प्शन पोशन है, दो पोशन बनाने का अपन ने सीखा था। उसके अलावा हर्बोलॉजी क्लास सीखा जिसमें अपन इंग्रेडिएंट्स कैसे उगाते हैं वो सिखाया था अपन को। अदर देन दैट कुछ साइड मिशन अपन ने कंप्लीट किए, जैसे जो ड्यूलिंग वाले एक साइड मिशन था जहाँ पे तुम दूसरे हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ ड्यूल करते हो, वो अपन ने कंप्लीट किया। एक एक साइड मिशन अपन यहीं पे कंप्लीट किया था जहाँ पे अपन को पानी में डुबकी लगा के कुछ फैमिली हेयरलूम या कोई चीज़ थी वो रिट्रीव करना था, वो लेके आए। तो एट द मोमेंट यहाँ पे एक मेन मिशन है नैटी वाला, एंड उधर एक साइड मिशन है। तो मे बी मैं सोच रहा हूँ अपन पहले साइड मिशन क्या है वो जान के आ जाते हैं, एंड उसके बाद मेन मिशन करेंगे। I never thought Ramrock's loyalists. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. Okay, तो basically इसका paint और card शायद retrieve करना है। I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Okay, सबसे पहले तो मुझे spell यहाँ पे change करना है। Yeah, great. I wish it had been under better circumstances. ये मिशन पहले करके आते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे फास्ट ट्रैवल करके ये मेन मिशन उठा सकता हूँ। वैसे ही शॉपकीपर से बात की थी, इसने बताया था कि इधर आसपास कोई थीफ है जो चीज़ें चुरा रही है, बट ये बंदे ने जो मिशन दिया है, did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. या आन ने जो अपन को मिशन दिया उसमें तो गॉब्लिन्स होने चाहिए क्योंकि उसने बोला ना उसके फॉलोअर्स किसके, रैनरॉक के। ये रात हो गई। यहाँ पे क्या है? Revelio. Stupid one. Not my fault you're a deadly great spider.
Accio! Incendio! Past the ruins. I'm on the right track. अपना ब्रूम अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, नहीं तो उसके ऊपर बैठ के ना अपन काफी जल्दी ट्रैवल कर सकते थे। ब्रूम मतलब वही झाड़ू की बात कर रहा हूँ मैं। An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Loyalist warrior. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Why is it? I won't rest until you're... How many of you are there? Nice. Leviosa! Stop! Protego! I don't have time for this! Leviosa! No! Accio! Lucky, that's all! After a minute dying, are we? Leviosa! Prepare to surrender now. Oh boy. You don't believe you do you? That's what Protego! नाइस। वो अपने एंशिएंट मैजिक है। रेड वाले जब आता है ना ऐसे सर के आजू बाजू में, तो वो तुम डॉज नहीं कर सकते हो, मतलब वो तुम सॉरी गार्ड नहीं कर सकते, उसको तुम्हें डॉज ही करना पड़ेगा। Accio! Incendio! Leviosa! Well, that was quite something. Now, to free Arn's cards. ये पूरा सेटअप है इनका इधर। Revelio! Quite an enchantment. The cards are returning to Arn. Accio! Revelio! ये पीछे एक चेस्ट है, बट इसको कैसे हिलाऊं मैं? Accio! ओह लॉर्ड, बस नॉर्मल अटैक करना था उस पे। Revelio! ओके, मैप पे एग्जैक्टली किधर हूँ मैं अभी? है कौन सा ये एरिया? हॉगवर्ट्स वैली, कोस्टल कैवर्न। इस तरफ एक फास्ट ट्रैवल है, आई थिंक मैं उसको शायद अनलॉक करके आ जाऊँ, ज़्यादा सही रहेगा। अगले बार इतना भागना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये इधर है सब, ये ब्लू जैसा क्यों दिख रहा है? ऐसा चमक क्यों रहा है ये? इसका कुछ यूज है क्या? Accio!
आई थिंक मकड़ी होंगे, मैप पे दिख रहे कुछ रेड कलर के। कुछ और है ये, रेड स्पाइंड। Yes. Accio. Incendio. Levioso. वही कितना Levioso. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. पे लेवियोसो वगैरह उतना काम नहीं कर रहा। Incendio. ओ भाई थोड़े से टैंकी थे ये बंदे, बट ठीक है। आई थिंक कैबेज के साथ अपन ने मिक्स करके वर्क कर गया। कैबेज ने भी थोड़ा ये और बच गया है। Incendio. Incendio. अपना थ्रो काफी पावरफुल है, ये वाला जो चीज है ना, ये। ओ भाई Incendio. ओ भाई उसने एक बार में इतना डैमेज किया ये। उसने एक बार में मेरी एचपी खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट, कि मेरी एचपी ऑलरेडी कम थी, मेरा ध्यान नहीं गया। How nice to see you, my young friend. आई थिंक ये सारे चेक पॉइंट्स पे एक ही लेडी है, ये जो मूर्ति है ना सेम है, तभी वो अपन को रिकॉग्नाइज कर रही है। एनीवेज लेट्स फास्ट ट्रैवल बैक। पहले आन से बात करते हैं। आन ही था ना वो बंद गॉब्लिन का नाम, जिसने अपन को क्या कहते हैं मिशन दिया था। उसके बाद नैटी से बात करते हैं। Force and control spells helps you juggle smaller enemies. या स्पेल्स की थोड़ी वैरायटी दी है। फोर्स स्पेल, कंट्रोल स्पेल, जैसे एक्यो जो है जिससे अपन चीज़ों को खींचते हैं वो फोर्स स्पेल है। कंट्रोल स्पेल जैसे लेवियोस हो गया। फिर इंसेंड्रो जो भी है वो फायर वाला, वो डैमेज स्पेल है। उसके बाद कुछ यूटिलिटी स्पेल है जैसे रिपेयर हो गए, या फिर लूमिनस लाइट चलाने वाला हो गया वो सब, या फिर जो अपन थोड़ा सा इनविजिबल हो जाते हैं स्टेल्थ वाला, वो सब यूटिलिटी स्पेल्स है। तो 4 कैटेगरी है बेसिकली गेम में। New potions and plants can be unlocked for your tool wheel by purchasing recipe Like a from. place right out of a storybook. अरे ये शायद सुबह ही रहती है, अभी गायब हो गई। दिन में आना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। लेकिन वो तुम बेसिकली वहाँ पे खड़े रह के मिशन स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप दिन हो जाएगा। If you're here for my wares, On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading.
Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Okay, there we go. Goblin helmet मिला. I've always said that travel broadens the mind. I think अरे कैबेज वेस्ट कर दिया मैंने वापस. इस साले इन्वेंट्री खोलने के चक्कर में हर बार एक एक कैबेज फेंक रहा हूँ मैं. या मैं आई थिंक जस्ट एक विजुअल चीज मिली है अपन को. गॉब्लिन वाला, हाँ, गॉब्लिन मेड हेलमेट विजुअल है. अगर तुम्हें एक आर्मर्ड, मैं 100% श्योर हूँ कि अभी इसमें दूसरे आर्मर के पीसेस भी होंगे, जैसे चेस्ट पीस एंड बॉडी पीस वगैरह. तो आई गेस तुम्हें पूरे एक आर्मर्ड जैसा बंदा लुक चाहिए तो तुम वो भी बना सकते हो. यू जस्ट नीड टू डू द करेक्ट साइड मिशंस. दिन हो It गया. is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. ओके, सो बेसिकली अपन ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था जो अपने साथ एकदम स्टार्टिंग में हुआ था गेम की, कि जो ड्रैगन अटैक किया था एंड फिर अपन को जो चीज़ मिला ग्रिंगॉट्स में. तो 3 कैरेक्टर्स अपन से बार बार पूछ रहे थे, जैसे प्रोफेसर वीजली हो गई, नैटी हो गई एंड सेबेस्टियन हो गई. सेबेस्टियन वो दूसरा स्टूडेंट जो अपने स्लिथरिन क्लास में से. तो नैटी काइंड ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर जिसको अपन ने बताया. तो मुझे लग रहा है इन तीनों में से किसी भी कैरेक्टर को जो तुम बता रहे हो मे भी स्टोरी में आगे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है. जैसे कि हो सकता है कोई सीक्रेट एजेंट और रैग्नो, अरे वो बंदे का नाम क्या है, रैनरॉक, वो गॉब्लिन का नाम रैनरॉक है. तो हो सकता है अपन मुश्किल में पड़ जाए, या फिर हो सकता है अपन आगे कहीं भी इन्हें हेल्प के लिए बुला सकते हैं. तो कुछ भी हो सकता है. तो मुझे जो सही कैरेक्टर्स लगते हैं, जैसे मुझे सेबेस्टियन स्लिथरिन का है तो कैरेक्टर थोड़ा सा फिशी लगता है, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया. प्रोफेसर वीजली से इसलिए छुपा रहे क्योंकि जो प्रोफेसर फिग है उसने बताया था दूसरे किसी टीचर्स को बताना नहीं, इसलिए. नैटी को फिलहाल अपन ने बताया कि सब प्रोफेसर वीजली को भी बाद में कभी बताएंगे. लेकिन मुझे प्रोफेसर ब्लैक पे पूरा भरोसा नहीं. जो हेडमास्टर है ना वो भी थोड़ा सा अजीब सा है. एनीवेज ये मिशन कंटिन्यू करते हैं. आई एम ग्लैड टू हियर इट. दिस कुड बी डेंजरस. नहीं, Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but
perhaps understandably, would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. स्टूडेंट्स खुद जाके अभी वो पुलिस का काम भी अपन करने वाले. Imagine how inconvenient travel was. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? क्या है वहाँ से कैसे? अच्छा नहीं, यहाँ से आवाज आई शायद. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? आवाज तो उन्हीं की आ रही Very थी, well, Mummy. बट मिशन उस तरफ है. अपन लिटरली अभी किसी के घर पे घुस के उनके चेस्ट में से गॉगल्स चुरा के निकले They वहां must से. have come this way. Think! क्या चल रहा है इधर? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Stupidify? You there! I see you! ये कौन है? I'll watch the light go out of your eyes. Okay, the collection section of your field guide has been updated with the new enemy types. You may learn valuable insights on enemies such as their weakness to certain spells. अच्छा, collection section of your field guide. Okay, ठीक है. You know where to I'm not going anywhere with you. You take this student over my dead Going up! Child! Tell Rookwood to find me himself. इतना ही था? Yeah, इतना ही था. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. एक सेकेंड, मैं पहले वो देखना चाहता हूँ जो इन्होंने बताया था ना, कलेक्शन सेक्शन में एनिमीज ये क्या एनिमीज या when its mouth is wide open, Levioso can be used on its fleshy tongue to hoist it into the... अच्छा, मतलब जब ये वो ऐसे टंग से अटैक करते हैं ना, तब अगर अपन ने लेवियोसो किया तो बेसिकली तब ये हवा में उड़ सकते हैं, वरना अपन इन्हें उठा नहीं सकते. While recovering from lunge attack, they are vulnerable to force spells that will flip or force their bodies into various direction. ये शायद अपन ने गलती से किया था, मैंने देखा था एक दो बार ऐसे उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं. ये अलग अलग है क्या? ग्रेट स्पाइन डगवुड और ये क्या है? कॉटन ग्रास. अच्छा, दोनों अलग अलग है. इनका क्या है? सेम है इनका. ठीक है. Their powerful curse cannot be blocked by shield charms. Okay, but interrupting that cast with a serving charm will spin. Severing charm क्या है? Will spin them to the point of losing control and hitting one of their own gang. Hitting a troll with its own boulder will catch it off guard and make it more vulnerable to follow-up attacks.
ठीक है, ये सारे तो नॉर्मल एनिमीज लगे अभी तक, तो उनके बारे में से अलग से याद रखने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही। जब टफर एनिमीज You're आएंगे right. तब देखेंगे। I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. सो मर्लिन काइंड ऑफ एक फेमस कैरेक्टर है जो आर्थर के राउंड टेबल में था, एंड वो फिक्शनल कैरेक्टर इसमें भी है, अपने हॉगवर्ट्स से पढ़ा हुआ है, तो ऐसे करके बोला। मुझे पता नहीं एक्चुअल जो जेके रॉलिंग के हैरी पॉटर के नॉवेल्स है उसमें मर्लिन है कि नहीं, लेकिन आई गेस होना चाहिए, तभी उन्होंने गेम में डाला है। एनीवेज ये कंटिन्यू करते हैं। आई गेस मुझे लग रहा है अपन को कोई नए टाइप का साइड मिशन मिलने वाला है। सीम्स अ बिट टीडियस। I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I think अपन जो I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. या ये जो सिंबल्स मैंने और भी जगह पे देखे थे, यही है मर्लिन्स ट्रायल। ओके कूल। This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pies. Accio! Levioso! Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sing. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. इतना ही था क्या? मतलब कुछ I लूट think we मिलेंगे can अपन call को। that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground.
You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. So Hogsmeade से And do be Mallowsweet careful खरीद out सकते हैं here. अपन. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Trials of Merlin नया साइड क्वेस्ट बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन काइंड ऑफ एक मतलब एक ऐसा क्वेस्ट है जो तुम थ्रू आउट द गेम करते रह सकते हो. ऐसे अपन को एक दो और मिला है, बीच बीच में करते रह सकते हो, तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपी मिलते रहेगा. एनीवेज, Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. ओलिवेंडर ये वही बंदा है ना जिसने अपन को वैंड दिया था, तो अपन को भी हॉक्समीड जाना है. सो बेसिकली यहाँ पे मर्लिन ट्रायल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. दूर है ये, जैसे मैप पे पास में दिख रहा है बट इतना पास में है नहीं है. ट्रेजर वॉल्ट, शुड वी गो चेक दिस ट्रेजर वॉल्ट. सीन ये है कि अपने ये काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसे भागते भागते रहूँगा ना. एक बार अपना ब्रूम अनलॉक होगा तो अपन ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं. अभी हॉग्समीड चलते हैं. ब्रूम पता नहीं कैसे खुलेगा, मुझे लग रहा है कोई क्लास होगा हॉगवर्ट्स में जो अपन को बाद में सिखाएगा कि ब्रूम कैसे यूज करना है. सिखाने का तो कुछ है नहीं, तुम बैठ के प्रोबेबली जैसे अपन गाड़ियाँ चलाते हैं दूसरे ओपन वर्ल्ड गेम्स में वैसे ही होगा. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlry. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Peeves अपन को पता है, वो जो कलरफुल कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, जो भूत है. So ये जैकडॉ बंदे को क्या ट्रैक करने क्या, उसको हेirloom अपन को किधर मिलेगा? Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts, always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand making is. So उसने जो heirloom चुराया था वो apparently एक wand है. Is there anything special about the wand? Oh yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. या तो वैंड काइंड ऑफ इनका एक सिंबल है ओलिवेंडर्स का. ठीक है, चलो. I'll have a look for you. You certainly give me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. सुनने से ये ज़्यादा साइड मिशन टाइप का लग रहा है, बट ये मेन मिशन है, तो मे भी कुछ एंशिएंट स्पेल रिलेटेड हो इसमें. देखते हैं.
सो अभी उसके भूत को ढूंढना पड़ेगा ना. इन्वेस्टिगेट द आउलरी. ये किधर है आउलरी? अपने हॉग्सवर्ड में है क्या? मैप किधर है? हाँ ये रहा. नहीं, कहीं और है ये. हॉगवर्ट्स से थोड़ा बाहर. अच्छा हाँ, ये मैंने देखा था, ऐसे टूटा हुआ कुछ वॉच टावर टाइप का था. सवाल ये कि इसके सबसे क्लोजेस्ट क्या मिलेगा मुझे. यही से जाना पड़ेगा, तब अपन इसे बाहर बाहर से घूम के आ सकते हैं. यहाँ से पास में पड़ेगा. तो पास में समनर्स मैच का एक साइड मिशन दिख रहा है. आई गेस वो जो अपन बॉल ऐसे खींचते हैं ना अपने तरफ, वो वाले गेम का है वो. Revelio. ये मिशन करे क्या? ट्राई करके देखते हैं. हाँ इसको तो जानता हूँ मैं, लेंडर. इसने अपनी, अच्छा इससे अपन उधर मिले थे वो प्लांट्स वाले क्लास में, हर्बोलॉजी वाले क्लास में. ये अपन को लेके गया था ना कैबेज तक, वही बंदा है. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in Charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? एक राउंड खेलते हैं. I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. What the hell? Come on, Leander. Oh. Accio. एक्यो रिचार्ज हो रहा है. जल्दी छोड़ दिया मैंने. Akio. All in the wrist. Accio. I'll let you have that one. Akio. ये वाला Try to थोड़ा beat टफ होने that. वाला है. वैसे मुझे बस थोड़ा सा पॉइंट चाहिए. मुझे अगर 20 भी मिले तो मैं जीत जाऊंगा. Yep, there we go. Well done. You beat me. Nice. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed.
सो बेसिकली ऐसे ड्यूलिंग कोर्ट तुम्हें याद है, वहाँ पे अपन 3 मैचेस लड़े थे एक के बाद एक। तो ऐसे मुझे लग रहा है यहाँ पे 3-4 बंदे होंगे, उन सबको तुम हराओगे तो ऐसे अलग अलग लेवल खुलता जाएगा। तो इसको हराया, अब अगले बार कोई और रहेगा यहाँ पे। ओके नाइस। to see you, my young friend. सो अरे यार वो मार्क नहीं है, मेन मिशन मार्क नहीं किया है। मिशन क्यों नहीं दिख रहा है? Ghost of a love. While in the Owlery, I came upon a treasure map at the top of the tower. I am not sure whom it belongs to, but it might not hurt to take a peek. मेन मिशन किधर है? What the hell? मुझे लगा उधर मेन मिशन है अपना। Oh shit! इतना नीचे तक मैप जा रहा है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैप इतना ही है। क्वेस्ट में देखते हैं, ओलिवेंडर्स हेयरलूम। ओके, अब देखें मैप पे ये किधर है। हाँ वहीं पे है मैप पे, उधर एक साइड मिशन भी है, बस वही डिफरेंस है। Revelio. Handy resource indeed, your field guide. बीस्ट क्लासरूम। अच्छा, इसके अभी तक खुले नहीं अपने क्लासेस। Accio. चलो भाई फाइनली पहुंच गए। आई गेस अंदर और क्लाइंब करना है इसे, अंदर से और क्लाइंब करना है। The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. अरे यार, टोटल 7 कैबेज उठाए थे, उसमें से मैंने 2 यूज किया, एक अभी बचे, 4 कैबेज वेस्ट कर दिया। इन्वेंट्री खोलने के चक्कर में हर बार कैबेज फेंक देता हूँ मैं टैब दबा के। Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. अच्छा, ऑलरेडी मतलब Those statues. वही है जहाँ पे इन ये सारे जितने भी I आउल्स है ना, recognize those handles. The summoning charm should do the trick. या जो भी आउल्स है वो सब मतलब यहाँ पे रखे जाते हैं। कूल। Accio. No statues here. I'll take that, thank you. Nothing. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. और स्टैचू चाहिए तुमको। I'd best keep looking. This'll do nicely. और 1 2 3 4 5 स्टैचूज चाहिए क्या, और कि 2 चाहिए? Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Accio. No statues here.
Nothing. I'd best keep looking. Here's a welcome surprise. No statues here. गलती से नीचे चढ़ने जाने वाला था मैं. ट्रेजर मैप? या आई गेस सो. ये लूमिनस स्पेल यूज करना है. किधर बट? ये ब्रिज क्रॉस करके. ठीक है, ये ऐसे लोकेशन पे जब पहुंचेंगे तब देखेंगे उसे. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. या गोस्ट ऑफ आवर लव वही साइड मिशन था जो मैप पे दिखा था मुझे. Levioso! Accio! Nothing. I'd best keep looking. I'll do that, thank you. No statues here. This'll do nicely. एक पेज उतरा था ना यहाँ पे. हाँ, ये रहा. सारे खोल दिए क्या मैंने जितने भी अवेलेबल थे? लग तो रहा है सब कुछ अनलॉक कर दिया है. 3 स्टैचू गिरे क्या बट? देखना पड़ेगा कितने स्टैचू गिरा है मैंने. एक ही स्टैचू गिरा है. Revelio. अच्छा एक ही चाहिए शायद. यप, एक ही चाहिए था. वो घोस्ट खड़ा है अपने सामने. है इसका सर. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. ओके, सो जो बुक अपन को मिला था उसमें से कुछ पेजेस मिसिंग था ना. वो ये बंदा फाड़ के लेके गया था एंड ये वो वॉन्ड भी लेके गया. उसे लगा वो पेज में कुछ ट्रेजर या कुछ बना हुआ है तो उसको ढूंढते पीछे गया था एंड तभी हमारा. तो एक्चुअली उधर जो भी चीज़ है वो अभी भी उधर ही होंगी क्योंकि ये मर गया. तो और क्या. हाँ, ये फॉरबिडन फॉरेस्ट में अपन अभी तक गए नहीं है. यूजुअली स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं उधर जाना, बट अपन मेन कैरेक्टर है तो अपन कहीं पे भी जा सकते हैं. How did you steal from Peeves? Why did you take the wand? How did you lose your name? How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember.
Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. ओके, लाइट ब्रीज से मरा है तो हो सकता है कोई विजार्ड नहीं मारो, इसे कोई स्पेल यूज किया हो. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. ओके, सो आई गेस अब किधर जाना है? फॉरबिडन फॉरेस्ट पता नहीं मुझे किधर है. ये रहा ऊपर की तरफ. एनीवेज, मुझे लग रहा है अपन को अगले एपिसोड में करना चाहिए ये मिशन, क्योंकि दिस मिशन सीम्स लाइक इट इज गोना बी लॉन्ग. एक बार फास्ट ट्रैवल करके क्लोज कहीं पे सेव करते हैं. अपन फॉरबिडन फॉरेस्ट गए नहीं है तो उधर कोई फास्ट ट्रैवल नहीं होना चाहिए. आई गेस हॉग्समीड ही रहेगा जो अपना क्लोजेस्ट है. इसके अलावा अपने पास क्वेस्ट में एट द मोमेंट क्या क्या है? मेन क्वेस्ट असाइनमेंट, कंप्लीट प्रोफेसर एकार्टिस असाइनमेंट, अटेंड डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट क्लास ड्यूरिंग डे. आई थिंक वी शुड डू द असाइनमेंट फर्स्ट ना, क्योंकि अपन को एक नया स्पेल मिलेगा, एक्सपिलियारिमस. देखना पड़ेगा स्पेल क्या करता है. गॉबलस्टोन ढूंढने के लिए कोई हाई हाइटेड एरियाज में 6 गॉबलस्टोन है. गोस्ट ऑफ लव मैप वाला. फाइंड द सेकंड लैंडमार्क, ये आर्थर का ट्रेजर, ये 2 ट्रेजर मैप वाले. फाइंड द लोकेशन डिपिक्टेड ऑन द पेंटिंग, ये वो फ्रेम वाला है, फोटो वाला है. ठीक है. अदर देन दैट ये कंप्लीटेड है ना, फिर ये ऐसे क्यों दिखा रहा है? अच्छा, वो साइड मिशन इसलिए उनका अलग सिंबल है. ठीक है. या तो अगले एपिसोड में ना अपन पहले ये मिशन, ये जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करेंगे. मुझे जैसे एक सेकंड चेक करने दो कि क्या मैं उस स्पेल देख सकता हूँ जो भी है वो. डुपल्सो एक्सपिलियारिमस ऐसा कुछ था ना वो. ये रहा. Disarm wands and weapons from most enemies who wield them. Also deals damage to all enemies even if they do not carry a weapon. Okay. Damaging spell है. Basically जो भी weapons वाले enemies हैं उनके against काफ़ी useful रहेगा. या ये जो ranged weapon वाले. या तो अगले episode में पहले अपन ये करेंगे, assignment करेंगे. उसके बाद ये जो मिशन है, ये जो कोस्ट बंदा था उसका नाम मैं ऑलरेडी भूल चुका हूँ. बेसिकली जब अपने मेन स्टोरी से रिलेटेड मिशन है तो वो तो करना ही है, वो अपन उसके बाद करेंगे. एनीवे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक ठोकना मत भूलिएगा. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.